हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया। आई गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज़। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखें। इट वाज रिलेटेड टू अजिंक्य रहाणे कम बैक इन इंडियन टेस्टिंग। सो आज मैं एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द डबल हेडर। आज वीकेंड है, सो ऑन वीकेंड वी गेट 2 मैचेस। सो आज हम उन दोनों मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मेरे वीडियोस, ये वाली वीडियो भी लाइक करें और मेरे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने IPL पे बनाई हैं, उससे पहले इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। आप उसमें अपने कमेंट दे सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। ग्रेट। सो आज 2 मैच हैं। पहला मैच है गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स इन ईडन गार्डन। इट्स अ डे मैच, ये 3:30 पे शुरू होगा। So first of all, let's discuss about this match. So if we talk about Gujarat Titans, they are playing exceptionally well in this tournament. पूरे IPL में सिर्फ वो 2 मैच हारे। एक बिकॉज ऑफ रिंकू सिंह, जिन्होंने एक ओवर में 5 छक्के मार के मैच जिताया, और दूसरा अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जो मैच भी लास्ट ओवर तक गया। So Gujarat Titans, no doubt, is the strongest team in this season, और वो अपना रिवेंज भी लेना चाहेंगी KKR से, बिकॉज द स्कार्स फ्रॉम दैट मैच, जिसमें लास्ट ओवर में 29 रन्स 30 रन्स बनाए रिंकू सिंह ने, इट इज़ स्टिल देयर ऑन गुजरात टाइटंस। यश दयाल, द बॉलर ऑन द रिसीविंग एंड, उसके बाद कोई मैच नहीं खेला। देयर वर डिफरेंट न्यूज़ दैट ही इज़ नॉट फिट इन। हार्दिक पांड्या ने कहा कि वो मेंटली इज़ नॉट एबल टू फॉरगेट दैट। सो डेफिनेटली गुजरात टाइटंस वांट टू टेक रिवेंज, और वो 2 पॉइंट्स और जीत के अपनी पोजीशन और कंसोलिडेट करना चाहेंगे। द काइंड ऑफ सीजन दे हैव सो फार एंड द काइंड ऑफ टीम दे हैव, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो टॉप 2 में आए, बिकॉज दे आर 4 or 5 वेरी कॉम्पिटिटिव टीम्स। एंड अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक दिन अगर प्ले ऑफ में आप अच्छा नहीं भी खेलें तो अगले दिन कवर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार गुजरात टाइटंस की टीम देखते हैं। सो ये टीम है, अगर आप देखें गुजरात टाइटंस की, सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वही हैं जो पिछले मैच में खेले। शुभम गिल, साहा, पांड्या। there's a mystery around साई सुदर्शन, जो बहुत अच्छा खेले थे इनिशियल फ्यू मैचेस में। देयर वर कपल ऑफ वेरी क्लोज मैचेस जो उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए जीते, बट मिस्टरली ही वाज नॉट पिक्ड फॉर लास्ट 2 मैचेस, और उनके बाद में कोई इंजरी अपडेट भी नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली उनको ड्रॉप किया गया था, उनकी जगह विजय शंकर को खिलाया गया था। बट अगर वो फिट होते हैं, इफ़ ही इज़ फिट, so definitely he will be back on in the team, because not only he's a decent batsman, but वो spinners को बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो एक लेफ्ट हैंडेड है। तो वो स्टार्टिंग में जो 3-4 राइट हैंडेड बैट्समैन है गुजरात टाइटंस में, that will be taken care of. Rest of the team, definitely पांड्या है, अभिनव मनोहर, जिनको शायद ड्रॉप कर देते हैं, बट लास्ट मैच में द वे ही अटैक्ड स्पिनर्स, उन्होंने अपनी जगह कंसोलिडेट कर लिया। ही प्लेड एक्सीडिंगली वेल अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। उन्होंने पीयूष चावला और बाकी स्पिनर्स को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया टिकने का। सो ही विल बी इन द टीम। टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, आई डाउट KKR की, बिकॉज इट इज़ अ डे गेम। सो पिच इतनी ज़्यादा टर्न ना ले, बट स्लो होगी पिच, और ड्यू का कोई रीज़न नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से
और स्विंग भी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स अ डे मैच. सो मेरे हिसाब से दे विल बी प्लेइंग अल्जारिज जोसेफ इन प्लेस ऑफ जॉश लिटल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और एज अ मेन प्लेयर, और मे बी मोहित शर्मा को दे कैन यूज़ एज इम्पैक्ट प्लेयर और नूर मोहम्मद. बट अल्जारिज जोसेफ के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज ही इज़ पोटेंशियल विकेट टेकर. वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं. Yeah, he leaked runs, but he is overall a good option. So this is Gujarat Titans team. Definitely pretty strong. Shubman Gill, who played for KKR for a long time, and in fact he was one of the front runners as a captain for KKR. वो अब गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और वो उनका परफॉर्मेंस ईडन गार्डन में काफ़ी अच्छा है. सो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज. बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात टाइटंस हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग यूनिट. उनके पास मोहम्मद शमी हैं, राशिद खान है, नूर मोहम्मद है, मोहित शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. इफ़ दे ऐड अल्जारिज जोसेफ, वो एक एडेड एडवांटेज होगा. दे हैव 5 or 6 वेरी गुड बॉलिंग ऑप्शंस. So yeah, Gujarat Titans are pretty confident. They have all the arsenals to win today's match. Talking about KKR, एक बार इनकी टीम भी देख लें. ये KKR की टीम है. KKR will be relieved because उनकी opening batting, especially top order, was struggling a lot. Last match में Jason Roy. So in fact, in last 2 matches, Jason Roy ने खेल के he has provided that stability in KKR batting against CSK because of injury which he suffered in the match itself. वो opening नहीं कर पाए, but against RCB he was very impactful, and definitely KKR will be happy कि वो फॉर्म पे हैं. So ओपनिंग वही रहेगी, जेसन रॉय, जगदीशन, फिर आपके पास वेंकटेश अय्यर हैं, नीतीश राणा हैं, रिंकू सिंह है, दसल हैं, शार्दुल ठाकुर एज पर द सोर्सेज ही इज़ फिट, सो ही विल बी बैक इन द टीम. वो होंगे टीम में. नारायण होंगे टीम में. देन वी हैव चक्रवर्ती, उमेश यादव एंड सुयश शर्मा जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे. अगेन डेविड वेजे की टीम में इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिकॉज ही प्लेज द सेम काइंड ऑफ रोल एज शार्दुल ठाकुर डज. और शार्दुल ठाकुर जब टीम में आ गए हैं तो KKR वुड लव टू यूज़ वन ओवरसीज प्लेयर. उनके जगह वो अगेन इधर टीम सऊदी या लोकी फर्ग्यूसन को खिला सकते हैं. टीम सऊदी को ऑल्दो पिच पे इतनी ज़्यादा सीम या स्विंग कंडीशन नहीं होगी बिकॉज इट्स अ डे मैच, बट ही इज़ प्रीटी इफेक्टिव. ही हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स इन हिज आर्सेनल, सो ही कैन प्ले. और अगर वो पेस का यूज़ करना चाहते हैं KKR, स्पेशली टू लोकी फर्ग्यूसन who was in excess of 150, so वो प्ले कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं. KKR के लिए जो बिगेस्ट चैलेंज करेंटली इज़ द फॉर्म ऑफ एंड्रू रसल एंड सुनील नारायण. ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं KKR के. इफ़ यू लुक एट लास्ट फ्यू सीजन्स, इन दोनों की परफॉर्मेंस के बेस पे ही KKR ने एवरी टाइम दे हैव परफॉर्म्ड वेल. What I feel, where KKR is missing and underutilizing Russell is his batting position. अगर आप देखें, हर एक टीम ने आपके पास एक ऐसा बैट्समैन है who acts like a assassin. I mean, his job is just to go ahead and just smash ballers irrespective of match condition, irrespective of match position. CSK के लिए शिवम दुबे हैं. We saw how अभिनव मनोहर played for Titans last match. जितेश शर्मा हैं पंजाब के लिए. तिलक वर्मा थोड़े बहुत वैसे रोल प्ले करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए. सो दैट काइंड ऑफ प्लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको आयुष बदौनी लखनऊ के लिए खेलते हैं बिकॉज इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर, वो मैच को कुछ ओवर्स में ही मैच का एकदम पोजीशन चेंज कर सकते हैं. एंड रसल इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर. सो इन माय व्यू आपको रसल को फ्री हैंड देना चाहिए एंड आफ्टर 10th ओवर जैसे ही कोई विकेट गिरे आपको उनको भेज देना चाहिए विद अ क्लियर माइंड सेट दैट
योर जॉब इज़ जस्ट टू गो हेड एंड स्कोर क्विक रन्स इन नेक्स्ट 4 or 5 overs. आउट होते हैं कोई बात नहीं, आपके पास अब रिंकू सिंह है जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और ही इज़ परफॉर्मिंग बेटर दैन रसल इन दिस सीजन एज अ फिनिशर, और भी बाकी काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है. सो इन माई व्यू उनको वो फ्रीडम देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर वो 3-4 ओवर टिक गए तो वो किसी भी बॉलिंग अटैक को ही कैन शेड अपार्ट एंड वो के क्या का एडवांटेज दे सकते हैं. Similarly, अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें, सो दे हैव ओनली वन कंसर्न राइट नाउ एंड दैट्स द फॉर्म ऑफ हार्दिक पांड्या. ऑल्दो इन लास्ट मैच अगेंस्ट लखनऊ सुपरजायंट्स उन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी और दैट वाज वेरी क्रूशियल इन दैट लो स्कोरिंग मैच, बट थ्रू आउट द सीजन ही इज़ स्ट्रगलिंग अगेन, ही इज़ अनेबल टू मेक क्विक रन्स. ना वो एज ए क्राफ्टर का रोल कर पा रहे हैं, ना वो हिटिंग कर पा रहे हैं. तो दैट कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न, बट उनकी इतनी मतलब उनकी बैटिंग को मिस नहीं किया गुजरात टाइटंस ने इतना, बिकॉज दे हैव अ वेरी अमेजिंग एंड वेरी पावरफुल बैटिंग लाइनअप, एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप. डेविड मिलर, तेवटिया जैसे प्लेयर्स हैं जो इनिंग एज ए फिनिशर खेलते हैं. इवन राशिद खान इज़ नॉट मग विद द बैट, वो भी कुछ एक मैच में स्पेशली फर्स्ट मैच अगेंस्ट CSK में काफ़ी क्रूशियल रन्स बनाए थे. So going with the form, because it's a day match, so I doubt and definitely Gujarat Titans batsmen are much more capable to play against spin. So मुझे नहीं लगता कि तीनों mystery spinners will be that much effective. But going with the current form and the way they are playing, Gujarat Titans has an advantage and they can win. I would say that it will be 70-30, 30% for KKR, because it's their home ground and now they have got that combination right. So that's about the first match. Let's talk about the second match, जो कि Delhi Capitals और Sunrisers के बीच खेला जाएगा in the evening in Delhi. If we talk about both the teams have struggled a lot with their batting, with the performance of their overseas players. Indian players are not able to perform, execution missing है, close matches lost कर रहे हैं लोग. So both teams are struggling, and the only benefit is that both teams are coming up after a long break. In fact, both teams played their last match against each other. So ये reverse है, वो हैदराबाद में था, ये दिल्ली में है. So let's quickly look at Delhi's team. So ये है Delhi team, same team which played in the last match. The only change that I foresee is Rashid Patel, who will be replaced by Lalit Yadav, because match Delhi में है. So हो सकता है so spinners को ज़्यादा help मिलेगी. Lalit Yadav is a decent spinner, wicket ना भी ले, so he can hold runs, he can hold 1/4, and he is decent enough batsman as well. Rashid Patel, he is more kind of a hitter, जो रोल अमन खान ने भी करते हैं, so उनको ड्रॉप किया जा सकता है. Similarly, if I talk about bowling, so bowling में I don't foresee any changes, but again, if the pitch is slow, so they might go with Chetan Sakaria in place of Ishant Sharma, because Chetan Sakaria is very effective on the slow pitches. Rest of the teams are same. You might be surprised to see Prithvi Shaw again in the team. But the challenge with Prithvi Shaw, he is facing two troubles. First, of course, he is not in form currently. He is struggling a lot. But उससे भी ज़्यादा है issue है उनकी fielding. If you talk about, he is not able to perform good in field, and उनकी running between wickets भी बहुत ही ज़्यादा circumspect है. I mean, a player 22, 23, 24 years old player is used as an impact player is a big surprise, and Prithvi Shaw is not a player, कोई ऐसे unimportant player नहीं है वो दिल्ली के लिए. So it clearly shows that team does not have faith in Prithvi Shaw as a fielder. But advantage उनके लिए ये है कि
उनका रिप्लेसमेंट सरफराज खान ने भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं की मिडिल ऑर्डर में. ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग. बट फिलिप सेट सॉल्ट उन्होंने सिर्फ एक दो मैच ही खेला एज एन ओपनर. एंड I believe David Warner he wants to continue with Philip Salt at least for a few more matches. So it's touch and go. अगर रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन को लगता है कि पृथ्वी शॉ को एक और मौका दिया जा सकता है, सो ही माइट प्ले. सो इफ़ ही प्लेज वो सरफराज खान को रिप्लेस करेंगे एंड फिल सेट थर्ड नंबर पे आ सकते हैं, मिचेल मार्श फोर्थ पे. Rest of the things, I don't think there will be any difference. Talking about Sunrisers Hyderabad, ये इनकी टीम है. Again, they will play with the same team, but they are struggling a lot. Problem with Sunrisers is their batting lineup. They have invested a lot in Harry Brooks. काफ़ी महंगे player हैं, and he has got a lot of options. In all the 7 matches, सिर्फ वो एक मैच में चले जिसमें उन्होंने सेंचुरी मारी थी KKR के against, and that match Sunrisers won. But definitely the kind of player he is, team is expecting more. So yeah, he will be keenly watched, but I doubt that he will be dropped. He will be getting another opportunity. Mayank Agrawal के साथ opening करेंगे. Mayank Agrawal after getting his opening position back, decent form में लग रहे हैं. He is able to score quick runs. The only challenge with him is he is unable to accelerate after in the middle overs. वो opening power play में बहुत अच्छा खेलते हैं, but then he all of sudden he stops. Rahul Tripathi के साथ भी वही problem है. He is trying a lot of different kind of shots rather than playing conventional cricket. He is trying to become 360 player. और उनके पास हैं कुछ एक बहुत ही अमेजिंग शॉट्स जो उन्होंने लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत अमेजिंगली प्लेयर भी किया. And he got a lot of runs, but currently he's struggling, so he should focus on playing more conventional shots, and then as a surprise once in a while he can play those reverse scoops and scoops shots. Other players, again, Sunrisers will be heavily dependent on the middle order of Malakram, Abhishek Sharma and Klassen, because Washington Sundar is injured. So I believe that rather than going for Abdul Samad, they might play with Vivrant Sharma, जो जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर हैं. Because of 2 reasons. First, वो भी एक लेफ्ट हैंडर है, और सनराइजर्स टीम में आपके कोई भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है एक्सेप्ट अभिषेक शर्मा. सो ही माइट बी यूज एज अ फ्लोटर, मे बी 3rd 4th नंबर पे उनको बैटिंग करा सकते हैं टू ब्रेक दैट मोनोटनी. एंड ऑल्सो ही इज़ अ डिसेंट स्पिनर. Bowling wise, Sunrisers Hyderabad is decent, although on paper they are very strong, but they are unable to execute things. But still, players like Bhuvi, Jansen, Natarajan, Markande, Umran Malik, they are pretty decent, and they can hold fort against Delhi. Talking about the match scenario and who can win. सो अगर आप दिल्ली के दोनों मैच देखें तो दोनों मैच वो जो लास्ट 2 मैचेस वो जीते भी हैं. सो इट वाज दे स्ट्रगल्ड अ लॉट अगेंस्ट KKR जो उनका फर्स्ट विन था. दे ऑलमोस्ट लॉस्ट इट इफ़ नॉट फॉर अक्षर पटेल. वो एक हैंड पर टिके रहे और लास्ट में 2 या 3 विकेट से जीते. इट वॉज वेरी स्मॉल टोटल, बट अगेन दे मेस्ड अप द थिंग्स. in last match as well, Sunrisers should have chased that 144 target. वो कोई बड़ा target नहीं था, but they messed it up. So definitely दिल्ली अभी भी struggle कर रही है, और आज का मैच शायद वो जीत भी जाए, लेकिन qualifying for playoffs is going to be very big challenge for them, considering the way they are playing currently, and उनके बाकी बचे मैचेस कुछ बहुत strong teams के खिलाफ हैं. They have 2 matches against CSK. They have just like CSK, they have a couple of matches against strong team. So बात किया जाए आज के मैच की, तो definitely they can win. They have now trying to unlock that team combination. It is still not settled, but they can win. Talking about Sunrisers, again, their batting is heavily dependent on Harry Brooks. अगर वो चले तो
बात अलग होगी, नहीं चले तो they will again struggle. In my view, it will be more kind of 55-45, 55 for Delhi, because ये उनका local match है, और unlike Sunrisers Hyderabad, at least in Delhi, 3 players are performing in every match, like David Warner, Akshar Patel और Nokia. ये 3 players Delhi के हर match में ही perform कर रहे हैं, irrespective of the result. So definitely Delhi has an edge, but Sunrisers will also be keen to get back to the winning ways and want to avenge their last match loss. So that's all for today. Once again, you can subscribe to my channel and you can share your valuable feedback in terms of comments. This is a new channel I have started. It's been just a month, and whatever feedback you give, it will be really very beneficial for me. So thank you very much. I'll come up again at around 12 or 1 for the post match analysis of the match. Till then, goodbye.